हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स एंड पैलिंड्रोम इन रैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको ये जाननी ज़रूरी है कि रिवर्स मतलब क्या है। ठीक है, तो रिवर्स का मतलब ये है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू है जैसे 1 2 3, तो इसका अगर मेरे को रिवर्स चाहिए तो इसका 3 2 1। ठीक है, एनी अदर नंबर 1 4 6, देन इसका हो जाएगा 6 4 1, ऐसे करके मतलब 2 3 1, सो इट विल बी 1 3 2। सो दीज आर द रिवर्स। ओके ना, आगे से पीछे, पीछे से आगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रिवर्स कहते हैं। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं अब हम देखते हैं। ठीक है, तो पैलिंड्रोम जो है जब हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 1 2 1, ठीक है, तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो सेम आएगा 1 2 1, 1 2 0 2 1। तो इसको भी हम अगर रिवर्स करेंगे तो सेम आएगा 1 2 0 2 1। राइट गाइस? ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स, ये हो गया पैलिंड्रोम। अब हमको पता है कि अब हम रैप्टर में रिवर्स करना चाहते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए हमको क्या होता है, जैसे सबसे पहले मेरे को यूज़र से नंबर पूछना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं n स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, उसको n से मैं स्टोर करूँगा। जो नंबर मैं यूज़र से पूछूंगा दैट विल बी स्टोर्ड इन माई n। ओके, एंड मैं एक वेरिएबल लूँगा इसमें जो है लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होगा, जैसे कि मेरे पास अगर नंबर है 1 2 3, ठीक है, तो मैं हमेशा लास्ट डिजिट को रिमूव करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लास्ट डिजिट को एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक वेरिएबल लूँगा रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स में मेरा एक वेरिएबल होगा, तो इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। ठीक है, अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि वाई एम टेकिंग लास्ट डिजिट, वाई एम टेकिंग रिवर्स। ठीक है, तो जैसे कि अब मेरे पास एक नंबर दिया है 1 2 3। ठीक है, इसका अगर हम रिवर्स देखेंगे तो इसका रिवर्स आता है 3 2 1, इजंट इट? तो सबसे पहली डिजिट अब अगर मेरी रिवर्स की मैं देखूं तो ये 3 है। ठीक है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा रिवर्स में। ठीक है, ये मेरा इनिशियल नंबर है n जो मेरे को यूज़र ने दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसका रिवर्स करूँगा तो 3 2 1 हो जाएगा रिवर्स में। नाउ टू एलिमिनेट दिस 3 एंड ब्रिंगिंग इट अप टू हेयर, दैट फर्स्ट आई नीड टू टेक 3। ठीक है, अब 3 को मैं उसके बाद कैसे कन्वर्ट करूँगा, 3 × 10 + 2, तो मेरे पास आ जाएगा, इनिशियली 3 था, फिर ये 3 से चेंज हो जाएगा 32, चेंजिंग टू 32। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, 32 × 10 + 1, तो मेरे पास आ जाएगा 321। तो मैं इस प्रोसेस में इसको ला करके ये मेरा फाइनल रिवर्स होगा। ठीक है, तो मेरा रिवर्स का फॉर्मूला बन जाता है, रिवर्स का फॉर्मूला बन जाता है द लास्ट डिजिट प्लस रिवर्स इंटू 10। ठीक है, तो लास्ट डिजिट, व्हाट इज माई लास्ट डिजिट ओवर हेयर, 3। ओके, 3 प्लस दिस द रिवर्स इंटू 10। ठीक है ना, रिवर्स इंटू 10, तो ये बन जाता है। इसी को मैंने ऐसे करके लिखा था फर्स्ट टाइम में, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस द लास्ट डिजिट। ठीक है ना, ये मेरी ऐसे वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो लास्ट डिजिट जो है मेरा, लास्ट डिजिट मेरे को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट मेरा हमेशा मिलता है एक कॉन्सेप्ट से, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाती है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफ में बताता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 1 2 3 है एंड आई नीड टू एलिमिनेट दिस 3। ठीक है, टू एलिमिनेट दिस 3 व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाई 10। ठीक है, 10 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास
3 बच जाता है यहाँ पे आके, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा 3 बच जा रहा है करके। तो अब मेरे को ये 3 चाहिए यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे रैप्टर में हम लोग जब लिखते हैं तो हम रैप्टर में ऐसे लिखते हैं 1 2 3 मॉड्यूलस ऑफ 10 इज इक्वल टू 3। ये आती है हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। ये जब रिजल्ट आती है हमारे पास तो हम लोग को ये नोटेशन इसका ये होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास नंबर n था 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, लास्ट डिजिट विल बी इम्प्लाइड बाई n% 10, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी द रिवर्स विल बी इक्वल टू द रिवर्स इंटू 10 प्लस द लास्ट डिजिट, ठीक है गाइज। तो मेरे पास बेसिकली ये वाली फॉर्मूला होगी, दो जो लूप करना है हम लोग को हमेशा, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग बेसिक देखते हैं कहाँ से कैसे होगा ये, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाती है जो हम लोग लूप में लगाएंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट इज डिनोटेड बाई द ये मॉड्यूलस ऑफ n by 10, okay na, n modulus 10, so that will give us the always the last number, okay. And one more thing here I will introduce here is the floor concept. So floor will be also introduced here, floor of n% 10 every time. So here I have used this floor concept, okay na. So floor concept is used for what, you know guys, like I have a number, if a user is inputting, like a user inputs the value 123.5, okay na. Now this is the value which users inputs, okay. So when when the computer is taking the value for reverse, it will always count from before the decimal points, okay. So when I'm doing n modulus 10, when I'm doing n modulus of 10, okay, so when I'm doing n modulus 10, so what will happen is it will give me around 3.5, right, isn't it? See here, 123.5 when it's divided by 10, so 12 is a 120, now remaining is 3.5, okay. So 3.5 is the remainder here, okay. So this n is coming 3.5, so to round it off to 3 always I always need the floor concept, okay, this floor concept, okay. So what will be in the n over here, for this n will be equal to 3.5, but when I'm taking the floor of this, when I'm using the floor of this, okay, so floor will be the value which is least, okay na, least. So now see, if 3.5 is the value, so it is greater than 3 and it is less than 4, okay. When I'm talking about the floor, so floor is always down where you walk, okay. Floor you walk, so it is below your feet, so always remember down. When you are going to ceiling, okay, so ceiling is always upside the room, okay. So always take ceiling value will be 4, okay. So always I need the least value 3, okay now here 3, because I need to print over here 3 2 1 for 1 2 3 है ना. So 3, so even if it is 3.5, so it will take count up to 3, then 3 to 1, okay. If I again and again if I take here 3.5, then if you're using this formula, then you'll have a different answer, okay. You'll have very different answer than the one which you wanted. Now let's come and see what is the way we are going on through the loop, okay na. So there is a last digit, okay, there is a last digit and there is a reverse variable, okay. So these are my two variables which I am taking it here, okay na. So initially what happens is when 1 2 3 is there, okay, 1 2 3 is there and I am doing the modulus of that, okay, I am taking the modulus of this, okay. So initially this is my n, okay na. Initially the value of n is 1 2 3. When I am doing the modulus of this, okay na, modulus of this, when I am doing the modulus, okay, so the modulus why I am doing, I have to eliminate this 3, okay na. So 3 I have to eliminate, so to eliminate 3, 1 to 3% of 10 will give out to me 3, okay. So this step is denoted by this one, see, n modulus 10, okay, n modulus 10, it's storing to the last digit,
the last digit. Okay, so initially my last digit is 3. Okay, now I have to go to this reverse wala thing. Okay, so reverse is equal to reverse into 10 plus the last digit. Okay, so from here what I can say is, initially let us take the reverse equal to 0. Now I will tell you why it is 0 after this. Okay, so if I take 0, so 0 into 10 plus 3. So here 3. See, now this is 3. We want here reverse 3. Okay, so final one always we want reverse value will be 3 to 1. So starting from 3. Okay, I said you as before I said. After that 32, I will go to 32. I will jump to 32. After that I'll go to 321. Okay now, so in this way I'm proceeding. Okay, so this is only possible when first one will be 3. So in the first loop I'm taking reverse 3, last digit as 3. I'm getting it through this modulus. Okay, now the second time when I'm going to do, then this is my last digit. Okay, this is my last digit. Now see, 1 2 3 was the first time number what was there in the first loop. This 3 is removed. Okay, now my n value goes to 12. Okay, the 3 is removed, n is 12 now. When n is 12, okay, then first step is what? The n modulus of 10. Okay, so 12 mod 10 will give me 2. Okay, so this 2 is stored where? This 2, the n 12 mod 10, it's stored in the last digit. Okay, so I am storing it over here in the last digit, first thing. Okay, now see the reverse. Okay, so reverse was in at first it was 0, then in the first loop it went to 3. So 3 into 10 plus the last digit. What is the last digit here? This is the last digit, 2, right? So 2. Okay, so reverse value goes up to 32, isn't it? So first 3 it was there, now the value is 32, the reverse. See, one by one it is increasing. First it was 3, then 3 to 1, then 3 2, then 3 to 1. Okay now, so now what we'll do is, our last digit is 2, so the last digit is 2 for us. So 2 is removed. The 12 was there, initially it was 1 2 3. We removed 3, then the n went to 12. Now 2 is removed, then when 2 is removed, then it will become to 1. Okay, now n is equal to 1. Okay na? Now when n is equal to 1, so you can say that 1 mod 10. Okay, 1 mod 10 is equal to the last digit. This is the first thing we were doing. Okay, last digit, right? 1 mod 10 is the last digit. Okay, so the what is the answer? 1. So our last digit is 1. Write it over here, 1. Yeah, so here the last number we got as 1. Okay now, so 1 you write it over here, then go to the reverse concept. Reverse is equal to what now? See, 32 was the reverse number. Okay na, 32 was the reverse number. Okay, 32. Okay na, 32 is the reverse number. Now plus 1 is your last digit. Okay na, so it goes to 3 2 1. In this way you get the reverse thing. Okay na, so this is the whole sequence you have to remember. So first what I am doing in simple way is, first I am taking 3. Okay, then I am going to 32, then I am going to 321. So this is possible in which way? In this way only. See, 0 into 10 plus 3, then 0 in 3 into 10 plus 2. Okay, then it is 32 into 10 plus 1. Okay, so each time this 3 is coming here, this whole thing, the number which is there, that is coming over here. So this is the reverse. So this is always the reverse value. Okay, 3 32 33 21. Okay, so this is the final value in which we need the output. Okay, now let's go to the program in a short. So guys, this is the simple way. Okay, so I'm starting a program. So generally first I need to ask the user to enter the value. Okay, the number, any digit number. So here for any digit number, first remember that n equals to 0. So this is one of the operation. Okay, this is a condition. This is not assigning the value n equal to 0. Remember it. Okay na. So in next concept I'll say you
what you have to use. Some places you have to use n equals to 0, some places n equals to 0, some places you have to use n greater than 0, some places you have to use n less than equal to 0, some places you have to use n greater than n minus 1. Okay, so these all are the looping conditions that we'll see in the next concept, next video. Okay, so this reverse, then I'm assigning the reverse value to 0. So initially I need the first value as 3 over here. As I said, the first value will be 3. Okay, from 1 to 3 I started, so reverse first number is 3, so I need here 0 for this. 0 plus 3 will give me reverse number first will be 3. Okay, so that's the reason I'm using in this way. Okay, first I'm taking the mod, then last digit. Okay, then the last digit from that is assigned to the reverse. Okay, then that reverse and the last digit is again into the loop, and this float concept I have used over here. Okay, in this loop. So remember one thing, always in the Raptor, in no loop only you have to execute the looping concept. In yes there is no loop. Okay na, in yes wala statement you cannot have any of the loops, so only you have to execute through the no. And then in the when 3 times when it is executing, after the execution it will give us the final reverse wala thing. Okay, so the reverse is plus rev, and the rev I have used over here as the variable. Okay, so here the last digit is changing and the reverse is changing. Thank you guys, this is all about today. Meet you in the next video where I'll be saying you the n concept, the here operation concepts. Okay, and Raptor is a very easy one, and in further you can learn much more about UML and all that. That is much more interesting. Thank you guys.